Assalamualaikum everyone, this is MUNAZZA Bangash and welcome back to my channel. आज हम एक ऐसा लुक ट्राई करेंगे कि जो मैं हर बार जब भी किसी पार्टी में जाती हूँ तो मैं वही लुक अपनी आंखों पे करती हूँ. It is very easy to recreate, it is very easy to do. Just in a few steps आपको आराम से आ जाएगा कि किस तरह से मैं अपना आई लुक करती हूँ. Like it's very easy. Alright guys, so the first step is to prime the lids and then set it with powder. What I did was कि मैंने मसरत मिस्बा का फाउंडेशन लिया in the shade almond and मैंने वही in a very thin layer अपने eyelids पर लगा लिया, ठीक है, and उसको फिर मैंने Maybelline के पाउडर से सेट कर दिया है. Now what I did was after doing my brows मैंने Jaclyn Hill palette लिया and I took the shade MFEO which is a very light पिंकी न्यूड कूल टोन शेड. उसको मैंने अपनी क्रीज में लगाया ताकि बाकी के जो सारे शेड हैं वो एक ग्रेडियंट के साथ ब्राउ की तरफ जाएं. तो जो है आई अप्लाइड दैट एंड उसके बाद ग्रेडियंट को बनाने के लिए आई वेंट इन विद द डार्कर एंड द डार्कर शेड. सो आफ्टर MFEO आई अप्लाइड पूटा और उसके बाद मैंने बंस का शेड लगाया and then I went in with mocha to just darken the outer corner of the lid and just to deepen the crease. So that's what I'm doing right now. So it's MFEO, then Puta, then buns, and then mocha. So that's how we go about doing like prepping the eye. Now I'm just going in with a shimmer shade on the lid. So basically यहाँ पे you can use whatever shade you want depending on the color of your dress or what mood you're in, ठीक है. So just go in with whatever shade you want. And yeah, so I went in with the shade Faint. Yeah, so it's in the first row, the 5th shade. It's Faint from the Jaclyn Hill palette and I used it on my lids. So I wanted a very light, very pinky kind of a look today, so that's what I went for. And now I'm just going in with the shade Chip from the Jaclyn Hill palette just to darken up the outer corners. Alright, now onto the lower lash line. I'm just going in with the same shades that I used for my crease and my outer corner. So मैंने use किया buns. Now going in with liner. मैं Kryolan का Aqua Cake लाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ एसेंस के पेन के साथ ताकि उससे मुझे अच्छी एक ग्रिप हो जाती है. दैट्स इट. मैं एंड में थोड़ी सी टेल निकाल दूंगी अपने लाइनर की, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा मैं इस पर मेहनत करूँगी कि बिल्कुल क्रिस्प हो, बिल्कुल क्लियर हो. अब मैं मेकअप रेवोल्यूशन का रिडेम्पशन पैलेट ले रही हूँ आइकॉनिक 2 में क्योंकि इसका ब्लैक बहुत अच्छा है. सो मैं इसके ब्लैक को लेकर अपने लाइनर को सेट कर दूंगी. इससे क्या होगा कि जो मेरी इम्परफेक्शंस हैं वो छुप जाएंगी और थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट भी देगा. ओके, सो नाउ आई एम कोटिंग माय लैशेस विद some mascara. Any mascara would do. आप कोई भी लगा लीजिए, it's not that of a big deal. क्योंकि इसके ऊपर हम वैसे भी अभी lashes लगाने वाले हैं. The lashes that I'm using are by Artmatic. These are like available locally. And that's it, you guys. Thank you so much for watching. I hope you liked this look and I hope you recreate it. Please make sure to share it with me if you do. इसके अलावा please do not forget to like, comment and subscribe to my channel. Till next time, take care.